Ritika, welcome to BeautiCo. आज हम बात करेंगे सब में बेस्ट फाउंडेशंस दैट यू कैन फाइंड इन द इंडियन मार्केट फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है, तो इसी वजह से आई कैन नॉट स्पीक फॉर ड्राई स्किन टाइप बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अ फाउंडेशन सिट्स वेरी डिफरेंटली ऑन ड्राई टू नॉर्मल स्किन. ऑयली स्किन के लिए बहुत पर्टिकुलर होना होता है फाउंडेशंस के बारे में. आई मीन इट शुड लास्ट लॉन्ग, इट शुडंट मेक यू लाइक ऑयली ग्रीसी, और हमारे स्किन पे वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे बहुत केकी होने के चांसेस होते हैं, तो यू हैव टू हैंड पिक फाउंडेशंस. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. मैंने 7 फाउंडेशंस इन टोटल शॉर्टलिस्ट की हूँ, और ये सारे फाउंडेशंस बच प्रूफ 100% अश्योर्ड ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड, बट बिफोर गोइंग, please don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to hit the notification bell right next to the subscribe button so that you guys get notified every single time I upload a video. Now let's get started. कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, it is depending on my mood. मुझे किस तरह का कवरेज, किस तरह का फिनिश चाहिए, उस हिसाब से मैं फाउंडेशन चूज़ करती हूँ. सो सब में पहला फाउंडेशन जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है NYX टोटल कंट्रोल ड्रॉप फाउंडेशन. ये फाउंडेशन is it for me. मतलब the first time I tried it, it looked so beautiful. The color matches me so perfectly. It lasted so long, and it has this natural finish which is super duper lightweight. I mean, this is my 3rd bottle. ये पहला फाउंडेशन है जिसका मुझे like तीसरा बॉटल खरीदना पड़ा है. That's how much I love it. मुझे अगर आँख बंद करके कोई फाउंडेशन लगाना है वो है ये. Like I know that this will look good. This will look good in natural light, sunlight, night light, whatever it is. This is just such a beautiful foundation. और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि वो इतना forgiving है. तुम 1-2 ड्रॉप लगाओ, उसको स्प्रेड करो, वो ज़रा भी पैची नहीं दिखेगा. वो इतना नेचुरल और इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है. कोई भी बिगिनर को ये फाउंडेशन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ऊपर से ये एक बिल्डेबल कवरेज है. उसका क्या मतलब होता है? मतलब इफ़ यू अप्लाई लाइक 4 to 5 ड्रॉप्स, यू विल गेट दिस वेरी नेचुरल फिनिश. एकदम सब कवर कर देगा, बट तुम्हारी स्किन तो भी थोड़ी पीक होगी जिससे वो और नेचुरल लगे. और अगर आपको इसको अगर बिल्ड करना हो तो यू कैन अगेन गो इन विद अनदर लेयर विद 4-5 ड्रॉप्स मोर, एंड इट विल बिल्ड ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुली. कुछ भी हैवी नहीं लगेगा. ये एक्चुअली बहुत लाइट वेट है. तुमको लगेगा भी नहीं कि ये तुम्हारे स्किन पे कुछ लाइक फाउंडेशन जैसा लगा हुआ है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फाउंडेशन. नेक्स्ट फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं. ये फाउंडेशन तुम आँख बंद करके ले लो, चाहे आप नॉर्मल स्किन टाइप हो, ड्राई स्किन टाइप हो, ऑयली स्किन हो. ये एक जेनेरिक फाउंडेशन है जो सबको सूट करता है. वो है Maybelline's मैट एंड Poreless फिट मी फाउंडेशन. मेरा शेड इसमें 228 है. अब ये फाउंडेशन एक स्टेपल है. आपको अगर कोई फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना है विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी, this is it. It suits oily skin as well. It has this very natural finish to it. Again, very easy to apply. Beginner को कोई दिक्कत नहीं होगी ये फाउंडेशन अप्लाई करने में. हेवी नहीं दिखता, बहुत लाइट वेट है. और NYX फाउंडेशन का थोड़ा सॉफ्ट मैट फिनिश है. ये एक्चुअली हैज़ अ वेरी नेचुरल फिनिश विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो टू इट. Don't worry, oily skin types, it is not gonna look oily on you. It is actually a very beautiful looking foundation. It's just that find the perfect shade for yourself, and this has a medium to full coverage. So one layer will give you that medium coverage जिससे आपका blemishes, dark spots, everything will become even. But if you want to like completely have a blank canvas, then you go for a fuller coverage, and again it layers very well. It won't feel heavy on your skin whatsoever, and it's lasting. Like, it's not as long lasting as the next one, but it will last you for like
6 to 8 hours I would say, और उसके बाद it will start wearing off. Okay, so ये foundation college going girls, फिर office going people, like everyday beginner people will love this foundation because it's very forgiving. You can easily apply it, थोड़ा सा लगा दो, blend कर दो, वो blend भी बहुत easily हो जाता है. तो it's like a 5-minute kind of foundation where you do not have to sit and work on it and ऐसा लगे patchy है, यहाँ पे सही नहीं लगा, यहाँ पे सही नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो तीसरा फाउंडेशन भी Maybelline से ही है. ये है Maybelline का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. अब ये बहुत ही अलग है Maybelline फिट मी से. ये कम्प्लीटली एक ऑयली स्किन टाइप के लिए ही है. दिस इज नॉट गोइंग टू सूट अ ड्राई स्किन whatsoever. It's super matte firstly, super matte. This is सातों फाउंडेशन में से सब में मैट फिनिश इसी का है. और ये फुल कवरेज है. ये पक्की बात है कि ये फुल कवरेज है. मतलब तुम लगाओगे तो थोड़ा सा हैवी फीलिंग लगेगा स्टार्ट में बिकॉज इट्स अ थिकर कंसिस्टेंसी दैन द Maybelline फिट मी. और ब्लेंड बहुत इजीली हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लेंड होने में. हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है. आप जब ये फाउंडेशन यूज़ करोगे तो ये फाउंडेशन इतना स्मूथ दिखता है स्किन पे, इतना फ्लॉलेस दिखता है. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस फाउंडेशन. बट ये एवरीडे डे लाइट फिर ऑफिस कॉलेज में पहनने जैसा फाउंडेशन नहीं है बिकॉज ये थोड़ा हैवी दिखेगा उस चीज़ के लिए. आप वेडिंग्स में जा रहे हो या फिर कोई इवेंट में जा रहे हो तो ये फाउंडेशन इज़ परफेक्ट फॉर दैट एंड इट एक्चुअली लास्ट फॉर लाइक 24 आवर्स. आप जाके मेरा रिव्यू देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फाउंडेशन पे. आई हैव एक्चुअली worn it for 24 hours and you will see how beautiful this foundation looks. So this particular foundation is specifically for like events and functions and weddings and all of that. So yeah, a very good foundation for oily skin type, especially in the weather that we live in. I am from Mumbai, so यहाँ पे humidity is like at the peak and I get oily super fast, but ये मुझे oily इस तरह भी नहीं देता. जो नेक्स्ट फाउंडेशन है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू ऑल ऑफ देम, बट आई वुड से इट does justice to its price. It is the Milani's Concel+Perfect 2-in-1 foundation plus concealer in the shade 06 Sand Beige. Okay, this is amongst all the most beautiful looking foundations in daylight specifically. Why I say that, it is, my god, I don't know how to explain it, but the moment you apply this foundation, it looks superbly natural, superbly healthy, and it covers also beautifully. Like तुमको सिर्फ और सिर्फ वन पंप ऑफ दिस फाउंडेशन चाहिए तुम्हारा पूरा फेस कवर करने के लिए. और स्पेशली आप अगर ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रहे हो तो वो इतना नेचुरल दिखता है, इतना नेचुरल. मैं हमेशा जब भी ये फाउंडेशन पहनती हूँ मुझे मेरे स्किन पे कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिलते हैं बिकॉज इट लुक्स सो हेल्दी एंड नेचुरल. और आई मीन इट लुक्स लाइक सच एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन फर्स्टली. लाइक मेरे पास बहुत सारे एक्सपेंसिव फाउंडेशंस है पर ये फाउंडेशन जैसा दिखता है नन ऑफ देम लुक लाइक. मेरे पूरे फाउंडेशन कलेक्शन में से ये सब में बेस्ट दिखता है. अब इसकी लास्टिंग पावर अगेन आई वुड से इज लाइक 8 to 12 hours, एंड सिंस इट्स अ नेचुरल फिनिश
your oils won't come out, but it will mix in with the foundation so beautifully that it just looks like skin. But I would say that this is not a foundation for summers, because summer में, like at least in Mumbai, summer season के लिए ये foundation suit नहीं करता, क्योंकि summer में मैं बहुत ही ज़्यादा oily हो जाती हूँ. तो like it literally I mean, it doesn't get cakey, but yeah, I do get oily in the summer season. I would recommend this foundation maybe say in the winter season specifically. I actually use this foundation to cover my dark circles also. Like अगर मुझे मेरे पूरे face पे foundation नहीं लगाना है, मैं सिर्फ मेरे अंडर आइज में लगाऊंगी, थोड़े बहुत स्पॉट्स में लगाऊंगी, उसको ब्लेंड कर दूंगी और लाइक आउट ऑफ द डोर. मेरे हिसाब से ये फाउंडेशन इज़ एन ऑलराउंडर. तुम वेडिंग में पहनो, इवेंट्स में पहनो, या कॉलेज में पहनो, या ऑफिस में पहनो, दिस इज स्टिल गोना लुक वेरी ब्यूटिफुल एंड नेचुरल, एंड इट अगेन फोटोग्राफ्स वेरी वेरी वेल. अगला जो फाउंडेशन है वो है नायकाज स्किनशील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन, और मेरा शेड है प्योर ऑलिव. नाउ ये फाउंडेशन आई वाज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग टू लाइक इट, क्योंकि मैंने इससे पहले जब नायका का जो स्किन जीनियस फाउंडेशन है वो जब ट्राई करी थी, उसका मैंने रिव्यू भी करी हूँ, एंड अपेरेंटली द फर्स्ट टाइम आई अप्लाइड इट, इट लुक्ड गुड, बट देन आफ्टर दैट आई केप्ट अप्लाइंग इट and it just turned cakey, and I just felt like it was separating on my face. So I never used that foundation. I never showed it to you guys ever again because I never used it. So I wasn't expecting much because it said it's Nyka's SkinShield Anti-Pollution Foundation, which made no sense to me. So I was skeptical, but then I tried it out. The first time I tried it, I was like, okay, it looks good, but it was heavy. मतलब थोड़ा सा when you apply it on your face, you will feel like you're applying it like it's a little bit of a thicker consistency. तो जब आप अप्लाई करते हो तो ऐसा लगता है कुछ लग रहा है, but once it sets, you won't even feel it on your face. That's the irony. But मैं ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ guys, every single day, even when I'm going to office. और ये रेनी सीजन में तो ये फाउंडेशन is like a life savior to me. Like सुबह में लगाती हूँ 9 बजे और रात को मैं 10:30 बजे घर पे आती हूँ. माई फाउंडेशन लुक्स लाइक माई मेकअप लुक्स एग्जैक्टली द सेम. आई एम नॉट इवन अ लिटिल बिट ऑयली. Like for example, say yesterday I was like outside roaming, and I mean I had gone out for some work and it started raining heavily, very heavily. My face got wet. I was then again in a very bad condition, but my makeup was on point. Even when I got back home, my makeup was on point and everything was holding up so well. Like my bronzer was there, my blush was there, my highlighter was there. Like कुछ भी fade नहीं होता ये foundation पे. That's how good this is, and it looks super flawless. It has a very soft matte finish firstly, but it does not look heavy. It actually looks very natural and a beautiful foundation for like oily skin. Affordable side पे भी है तो, और very travel friendly. Like तुम गिरा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्लास बॉटल भी नहीं है. अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ऑफिस पे या ऐसा नॉर्मल डे पे अगर ये फाउंडेशन पहनना हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक अंडर आइज कवर कर दूँ, स्पॉट्स कवर कर दूँ, ऑल ओवर द फेस नहीं पहनूंगी बिकॉज इट कैन लुक अ लिटिल हैवी फॉर ऑफिस एंड कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट. तो अगर आपको कॉलेज या ऑफिस में पहनना हो तो सिर्फ लाइक स्पॉट्स कवर करने के लिए, डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, और ये ज़रा भी हिलेगा नहीं. आपका मेकअप सुबह से रात बहुत अच्छा दिखेगा. और वेडिंग और इवेंट्स के लिए आप इसको एक्चुअली प्रॉपर लाइक फुल कवरेज फाउंडेशन की तरह अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा.
जो अगला फाउंडेशन है वो तो यार मैंने पहली बार जब ट्राई की थी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया था. इट वॉज सो लाइक मैं भूत की तरह दिख रही थी. इट वॉज सो वाइट ऑन मी because the color was not right. So I never ever in my life thought of trying it again. पर फिर उसके बाद I was like searching for foundations to try out और थोड़ा affordable range में ही देख रही थी और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था. तो I was like चलो इसी को वापस से बुला लेते हैं सही शेड में. क्या पता सही शेड में लगाऊंगी तो थोड़ा अच्छा दिखे. तो I'm talking about the Wet n Wild Photo Focus foundation in the shade Desert Beige. My god, this foundation is so beautiful. I am wearing it right now and you can see, like, you can definitely see how flawless this foundation looks. मैं immediately जब ये foundation लगाती हूँ तो मेरे सारे pores गुल हो जाते हैं. Like my spots गुल. It's a full coverage foundation, but medium to full coverage. But again, a very very beautiful looking foundation. Especially कैमरा पे तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है. रियल लाइफ में आपको लग सकता है कि थोड़ा सा हैवी दिख रहा हो पर तो भी बहुत स्मूथ दिखता है. ऐसा लगता है कि कोई एक्सपेंसिव फाउंडेशन लगाया हो. और इट हैज़ अ मैट फिनिश, दैट इज़ फॉर श्योर. इट इज़ अ मैट फिनिश फाउंडेशन, आप जैसे कि देख सकते हैं. पर ये फाउंडेशन पे आप जब ब्लश लगाओगे, ब्रॉन्जर लगाओगे, हाईलाइटर लगाओगे, वो इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, इतने अच्छे से. इट लिटरली आप बोलते हैं ना पेंटिंग में एक लेयर पहले लगा देते हैं वाइट का और फिर उसके ऊपर पेंट करते हैं ताकि वो कलर्स वाइब्रेंट दिखे. दिस इज व्हाट दिस फाउंडेशन डज. लाइक इट पेंट्स योर फेस, हैज़ अ वेरी स्मूथ वन टोन फिनिश जिसके ऊपर आप जब कुछ भी कलरिंग करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा. तो दैट इज़ व्हाट दिस फाउंडेशन डज फॉर मी. आई एब्सोल्युटली लव इट. इट लास्ट्स for 12 hours for sure. Even in the humid weather that we live in, it lasts superbly. Or you can wear this foundation on events, weddings, and you know even the bride can wear this foundation. It's that beautiful. It photographs very well. Everyday wear के लिए ये foundation मैं recommend नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा heavy दिख सकता है डे लाइट में. ऑफिस के लिए भी नहीं करूँगी, कॉलेज भी नहीं करूँगी. तो लाइक इवेंट्स, ओकेजन्स, वेडिंग्स, ये सब के लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है. पार्टीज़, डेफिनेटली पार्टीज़ के लिए भी एक अच्छा फाउंडेशन. सो जो लास्ट फाउंडेशन है वो L'Oreal से है. दिस इज द L'Oreal Infallible Pro Matte Foundation. दिस इज इन द शेड सन बेज. मेरा शेड सन बेज है एंड इट सेज इट्स अ 24 hour फाउंडेशन, डेमी मैट फिनिश और मीडियम टू फुल कवरेज. तो अब ये एक आखिरी फाउंडेशन है जो मैं मेंशन करना चाहती थी. आई वाज डिबेटिंग whether I should or not, but then I was like I have worn this foundation and it actually lasts really well. लाइक ऑन ऑयली स्किन बहुत ही लंबा चलता है, सही में 24 hours चलता है. बट आई वुड से दैट दिस फाउंडेशन कंपेयर टू ऑल दी अदर फाउंडेशन इज लाइक सुप्रीम मैट. लाइक out of 10 I would give 10 on 10 for being matte for this particular foundation. It's very similar to the Maybelline Superstay, but Maybelline Superstay is a little bit more natural looking than दिस पर्टिकुलर वन. ये थोड़ा हैवी दिखता है और बहुत मैट दिखता है, अननेचुरली मैट दिखता है पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. तो अगर सपोज मुझे आई विल वेयर दिस फाउंडेशन ओनली व्हेन आई फील लाइक यू नो बहुत ह्यूमिडिटी है, उससे मैं बहुत ऑयली होने वाली हूँ, तो ये ही एक फाउंडेशन है जो मेरा काम कर सकता है. पर अगर तुम इसको रेगुलरली पहनोगे तो तुमको लगेगा कि मतलब तुम्हारे फाइन लाइंस वगैरह सब एग्जैजरेट हो रहे हैं. तो ये एवरी डे के लिए नहीं है. दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन इज फॉर लाइक एक्सट्रीम कंडीशंस अकॉर्डिंग टू मी. बट अगेन इट हैज़ अ मैट फिनिश, इट लुक्स गुड. थोड़ा सा हैवी फीलिंग है ये फाउंडेशन में और थोड़ा सा ऐसा खिंचा हुआ लगता है, बट स्टिल
if you're looking for like a waterproof, budge proof foundation, definitely this one. These were the foundations. I hope I helped you guys out. Agar aapko like you wanted like a list of foundations that will suit you, definitely इसमें से कोई भी foundation आँख बंद करके ले लो. It is gonna suit an oily skin type, that is for sure. Or also definitely watch out for sales on Nykaa. It's not sponsored. I'm genuinely telling you, buy all of this in sale because everything is at a lesser price, especially on weekends. So definitely watch out for that. So yeah, I hope this video was helpful. If you all did like it, please don't forget to give it a thumbs up. और अगर आपको लगता है कि आपके friends इससे benefit करेंगे तो उनके साथ भी share कर दीजिए. So now I'm gonna go and I'll see you all in my next video very soon. Until then, bye.